Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the first lecture from online sport program. We will start chapter number 1, electrostatics. Student, after this lesson, you will be able to understand and describe Coulomb's law. Electrostatics. Electrostatics is the branch of physics which deal with the charges at rest under the action of the forces called the electrostatics. Electro mean charges and statics mean rest. Charge is the intrinsic property of the fundamental particle. There are the two kinds of the charges, positive charges and the negative charges. These charges give the forces which hold the negative and the positive charges that make up atoms and the molecules is called the electric force. Basic law of electrostatics: like charges repel and unlike charges attract each other. Students, today the main topic is Coulomb's law. It is on the name of the scientist Coulomb. He stated his experimental observation on the quantitative nature of forces in 1784 AD, which is called Coulomb's law. It states the force between the 2-point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Mathematical form of the Coulomb's law. Force capital F, represented by capital F, is directly proportional to the Q1 and Q2. Q1 and Q2 are the point charge. What is the point charge? A point charge with non-zero charge is called the point charge. Equation number 1. Force capital F is inversely proportional to 1 over r square. It means the second equation is also called the inverse square law. It means when we draw force along y-axis and distance along x-axis, then the force will be decreased as the distance is increased. So the graph will be in this form. Combining the two equations, force is directly proportional q1 q2 and inversely proportional to r square. एक proportional का sign equal के sign में change q1 q2 divided by r square. K is called the constant, which is called the electrostatic constant. The value of the K depend upon the nature of the medium between the two charges, between the charges of and the unit system of the units SI system. K, which is called with value of the K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is known as the permittivity of the free space. The value of the epsilon naught is equal to the 8.85 10 raised by 12 Coulomb square Newton inverse m minus 2. Value of the K is equal to 9 10 raised by 9 Newton meter square per Coulomb square. Unit of K can also be find out by equation. Write equation again. F is equal to the K Q1 Q2 divided by R square. K is equal to force is proportional to R square Q1 Q2. K is equal to unit of the force equal to Newton, unit of R square m square divided by unit of the charge is equal to Coulomb, unit of the charge is equal to Coulomb, Newton meter square per Coulomb square is the unit of the K. Vector form of Coulomb's law. Coulomb's force is a mutual force. It means that if Q1 exert a force on Q2, then Q2 is also exert a opposite force on Q1. Then vector form of the Coulomb's law.
F 2 1 vector representation is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 and r square. R21, which is the unit vector. F21, the force which exerted on Q2 by Q1, means F21 can also be represented as force on charge Q1 on charge Q2 by Q1, and in this way F12, force on charge Q1 by Q2, and the R21 in this way F12 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, and the unit vector R12, representation of the unit vector and cap over it. These two forces F1 F12 force is equal and opposite to the other force. So the negative sign represents the opposite direction. It means the Coulomb's law in accordance with the Newton's third law of motion. The effect of medium. Students, by according to this topic, you will also learn about the definition of the relative permittivity, which is also called the dielectric constant. It means when q1 charge and the q2 charge and the distance between the two charges, which is taken always from the center, is represented by r and the arrows in this way. Then the effect of the medium. When we describe the Coulomb's law, then we suppose or the consider then the air, the vacuum between the two charges. When we place a medium between the two charges, then the force is decreased. Force is decreased by the factor. वट फैक्टर, वो कौन सा फैक्टर हो सकता है कि अगर आपके इसके अंदर जो है वो, अगर ये चार्जेस जो हैं वो आपने एयर में रखे हुए हैं, तो एयर के लिए आपके पास जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आएगी। और उस फैक्टर को आप क्या कहेंगे? उस फैक्टर को आप कहेंगे एप्सिलॉन आर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर आप यही दोनों चार्जेस जो हैं वो पानी के अंदर रख देते हैं, तो इट मीन्स ये फोर्स की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। वो कितनी डिक्रीज़ करेगी? डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन आर, कि उसकी वैल्यू जो है वो वाटर में क्या होगी। ये जो ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर आप जो है वो पानी ही रखें, इसमें आप इस जो है चार्जेस को गिलास में, ये एक्सपेरिमेंट गिलास में कर सकते हैं, माइका में कर सकते हैं, रबर ले सकते हैं, और जो है कोई ऑयल ले सकते हैं, एनीथिंग जो आप ले सकते हैं, लेना चाहें। तो इट फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये वैल्यू जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी? आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मटेरियल है और साथ साथ उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और अब हम वैक्यूम इसलिए लेते हैं कि उसकी वैक्यूम में एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होती है। अब ये वैल्यू जो है उन्होंने कहा कि फ़ोर्स आप जो लेती हैं उस फोर्स को आप दोबारा से लिख लें, के इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया कूलम्स लॉ। Then the force decrease represented by the letter prime over the force k q1 q2 divided by the r square and k epsilon r। मैंने जो आपसे कहा कि फैक्टर जो है उस पर डिपेंड करेगी कि वैल्यू जो है वो फोर्स की डिक्रीज़ कर रही है। अब हम स्प्लिट कर लेंगे वैल्यू ऑफ द के, विच इज़ इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 divided by r square, capital F, ये and the prime letter over it, capital F, which is equal to capital F, which is equal to the 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r square and the epsilon r।
इस इक्वेशन से भी आपको ये पता चल जाएगा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में है। इट मीन कि ये फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रही है। वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन आर फाइंड आउट करने के लिए आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ़ की वैल्यू हो गई और फिर आपके पास जो है वो ये एफ़ प्राइम की वैल्यू जो है वो डायरेक्शन में आ गई, जो है डिनोमिनेटर में आ गई आपके पास वैल्यू। For the vacuum, the value of the epsilon r is 1. For air, all is equal to approximately equal to the 1. For the air, a value is equal to 1.0006, which is nearly equal to the 1. Epsilon r की वैल्यू आपके पास जो है अगेन f over f prime, which is called the dielectric constant. Now the definition of define the स्टूडेंट, अब आपको इसकी डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ द डायलैक्टिक कांस्टेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी, विच इज़ कॉल्ड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज डन। स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ कूलम्स लॉ। अब आपके लिए होमवर्क है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कूलम्स लॉ and do the numericals of the 12.1 and 12.2. These two numericals are related to the Coulomb's law from this articles. ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम ये आर्टिकल बोर्ड में आया हुआ है। आपने ध्यान से इसकी डेरिवेशन करनी है, फिर आपने इसकी जो है डायलैक्टिक कांस्टेंट की डेफिनेशन याद करनी है। डायलैक्टिक कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है वो सेपरेटली भी आपको आ जाती है, और फिर ऑब्जेक्टिव में आपको जो है डायलैक्टिक कांस्टेंट की जो है वो एंड की इक्वेशन आ जाती है, विच इज़ इक्वल टू द एप्सिलॉन आर एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एफ एंड द प्राइम। फिर उसके बाद जो है आपको जो है आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।